Python, and secondly, what are the arrays and how to deal with arrays in Python. So these are the two topics, and in next class we will finalize this course with list comprehension and other data structures in the Python. Then after that we will be able to continue our advanced Python course, and that will be started and announced later on. So we start with the Python loops. And if you have any question in previous lectures, then you can ask me. Maybe you can post the on the chat, or you can raise your hand and you can ask the question. And I will try to check, or maybe someone of you, maybe Sama, Alina, or if someone else want to participate it and let me know. Okay, this is the question because I may not be able to see that window. So please let me know. So we start with the loops. Bismillah Rahman Rahim. And let's say we want to write a welcome to UT on the console, then we use the print statement, print welcome to UT that we have studied last time. We have seen if we want to print something on the console that we use, then we use the print function in Python. So if someone say to print 5 times welcome to UAT, then we have to write it 5 times. So in such kind of problems, we usually need to repeat same instruction multiple times, or maybe a expression to run multiple times. So in that cases, we use the loops in every language. Loop is in any language, that is in whether C plus, C sharp, Java, or Python. In Python, again, like high level languages, we have two type of loops. One is the conditional loop and other is the counter loops. Uh, Conditional loops are the statement are those actually repeat the any number of statements based on some condition. तो ये जो लूप्स होते हैं ये असल में किसी कंडीशन की बेस पे इट विल कीप एक्सिक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप. तो इसमें in Python we have the syntax in this way. It is same as that of that is in other languages. Here we use the uh, uh, keyword while. It is a predefined keyword. Then here we will mention the condition. Again, these are the brackets that I also told you in previous lecture that in Python, these are the not mandatory. So you can add these parentheses here, or you can maybe remove these one. After that, you add the colon. Colon means that the body of the loop is going to start here. It means that something coming up in at next step. And after that, whatever we want loop or this construct repeat multiple times, we will mention it with the tab. We will add an indentation or tab or spaces. Whatever come under this while loop, it will be executed. So this is the basic structure of the conditional loop. And these are the basic terms that we use for the different part of the loop. As I told you, it is the keyword and it is the loop condition, and it is called the body of the loop. So if we write down it in Python, then we can do it in this way. Like we will start with while, and we will add here a condition. This loop will keep executing until this condition get true is true. So first time our count value is 0, and here condition is count is less than 5. So it means condition is true. It will return true because count is actually less than 5. So it will return true while get true, and whenever while receive true from this expression, it will execute the upcoming lines. Those are mentioned with the indentation. So it will execute this line, print welcome to UAT. So again, it will come at the next line, and because it is also indented,
it is aligned with the upper line, so it will again execute it, and a value will be added into the count variable. Here we are using count is equal to count plus 1. सो इसी तरह जो है वो काउंट में वैल्यू प्लस होगी, और ये दोबारा इट विल गो बैक टू दी हेयर, यहाँ पे आएगा, एंड दिस कंडीशन विल check it again, and this time the value count value is the 1. So again 1 is less than 5, it will return true, और फिर स्क्रीन के ऊपर वेलकम टू यूटी प्रिंट होगा. तो इसी तरह ये फर्स्ट टाइम वेलकम टू यूटी प्रिंट होगा, फिर सेकंड टाइम प्रिंट होगा, फिर थर्ड टाइम प्रिंट होगा, or when loop count value goes up to the 5, it becomes the 5, then here condition get false, or when condition get false loop will not be executed. So finally ये क्या करेगा, ये कोड जो है हमें 5 दफा स्क्रीन के ऊपर वेलकम टू यूईटी प्रिंट किया हुआ शो कर देगा. तो ये कंडीशनल लूप है, कंडीशन लूप है. इट इज द कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली 100% सेम दैट इज इन अदर लैंग्वेजेस. बस इसमें और उसमें एक ही डिफरेंस है कि इसमें राइटिंग स्टाइल का फर्क है, और वो भी फर्क ये है कि इन पाइथन every structure whenever we start with the column. On other hand, if it is C++, then we will start every structure of with the curly brackets, and we will end everything with the closing curly brackets. So in Python we start with the colon whenever the some structure coming up after this definition, and we want to be the next upcoming lines should be the part of the first one, then we use the indentation. So इस तरह इंडेंटेशन से हम बताते हैं ये इसका हिस्सा होगा. तो ये पाइथन का स्ट्रक्चर है, चाहे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, चाहे हम कंडीशनल स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं, चाहे हम जो है लूप्स को डिफाइन कर रहे हैं. So this is the standard conditional statement workflow. Or let's say no, we want to write a simple program that will keep taking number as input from user until the user enters -1. So I hope you can write on this program, but for sake of an activity you can take 1 minute and you try to write it by yourself. तो कोशिश कीजिए, मैं 1 मिनट के लिए ज़रा इसको पास करता हूँ. ओके जी, होपफुली किसी बच्चे ने लिखा होगा, तो वी विल सी कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन. Here is the one possible way to do it. We will start take a variable. We will initialize it with the some default value, और उसके बाद we will say कि while number not equal to -1, जब तक नंबर -1 के बराबर नहीं है तब तक चलते जाओ. इट मीन्स के while उस वक्त तक चलो, run until number not equal to -1. तो it will keep executing जब तक नंबर -1 के बराबर नहीं होगा. And in every execution what we are doing, we are taking the input, converting into the integer and storing it back to the number. और ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक यूजर -1 एंटर नहीं करेगा. इफ यूजर एंटर -1 तो नंबर में -1 आ जाएगा, और एक्चुअली ये जो है when it goes here this condition get false, or because when user enter -1 this condition, why this condition will get false, here it will be -1 not equal to -1, that is the false thing. So it will return false and loop will be terminated, और उसके बाद program लिखा हुआ जाएगा, program ends. So in this way we can use the conditional loop. Actually there is other type of loop that is called the counter loop, and the main difference between the conditional loop and counter loop is when we run the conditional loop, we are actually expecting some kind of condition get true, will remain true, and our loop will keep executing.
and whenever the condition will get false, the loop will be terminated. On other hand, in counter loop, usually we know before the execution of the loop how many time it should run. So whenever we have this type of information before running some instruction, then we always and we should be using counter loops. So we see what is the uh, structure of the counter loop and how will we write it down. In Python, we can write it a counter loop in this way. Um, there is some technical details why we are using this statement. I will let you know, and there are more technical details that I will not discuss here in this class. Maybe we will be able to discuss after taking the advanced class. So we start with the basic thing that we need to understand for the counter loop. So here for means we are actually running a counter loop, and I is called the counter variable. काउंटर लूप के अंदर देयर इज ऑलवेज ए काउंटर वेरिएबल. वो काउंटर वेरिएबल क्या करता है, वो काउंट करता है कि मैंने कितनी दफा चलना है. ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन में थोड़ा सा इसका डिफरेंट मतलब भी है. एक तो हम बाकी लैंग्वेज में इसका मतलब ही ये होता है वी कॉल द काउंटर वेरिएबल, बट इन पाइथन इसका एक खास पर्पस भी डिफरेंट होता है. वी विल सी दैट शॉर्टली हियर इन दिस लेक्चर. अच्छा, फॉर आई का मतलब कि ये वाला काउंट करेगा कि कितनी दफा लूप ने चला है इन रेंज, मतलब कि आई तुम चलो इस रेंज के अंदर. एंड व्हाट इज द रेंज? रेंज इज ए पाइथन फंक्शन जो बताता है कि लूप ने कैसे चलना है. मतलब कि शुरू में जो हम इधर आर्गुमेंट पास करेंगे, इट मीन्स कि इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो. तो आई की जो पहली वैल्यू होगी ये हमेशा जो है इट विल बी जीरो. और यहाँ पे उसके बाद आई कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू जो है वो 5 -1 यानी कि 4 नहीं हो जाती. यहाँ जो भी हम वैल्यू बताएंगे इससे एक कम तक लूप चलेगा आई की वैल्यू के लिए. तो आई की वैल्यू 0 से आई की वैल्यू 4 तक लूप चलेगा. और एक दफा चलने के बाद वो आई की वैल्यू के अंदर जो है वो एक इंटीजर का इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि आई की वैल्यू विल बिकम दी i+1 आफ्टर वन आइटरेशन. तो लूप स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू इन वेरी स्टार्ट इट विल बी 0. ये प्रिंट जैक करेगा, ये अपने पास मेमोरी में ना आई को काउंट कर रहा होगा. तो 0 के लिए पहली दफा स्क्रीन के ऊपर जो है वो जैक जो है वो प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम लूप इधर आएगा और यहाँ पे automatically it will add 1 to I, because here this factor actually adding into the previous value. So the I value become the 1, or again print, it will print jack. इसी तरह it will keep going on until I will reach at the 4. So I की 0 वैल्यू के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए it will keep executing. और ये स्क्रीन के ऊपर क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है. तो आप इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 दफ़ा जो है वो स्क्रीन के ऊपर हमें जैक प्रिंट होगा. तो ये एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग एट 0 और वो 5 से लेस तक जा रहा है. तो 0 1 2 3 4 तक जो है ना वो इतने टाइम्स जो है वो लूप चलेगा. ऑन अदर वे जो मैं आपको कह रहा था, इसका थोड़ा सा डिफरेंट वे भी है अंडरस्टैंडिंग का. वो ये कि आप ये समझ लें कि एक्चुअली ये फंक्शन एक इस तरह की एक सेट या एक लिस्ट बना देता है. ये 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट, and it will add 1 to every previous values, and it will goes on up to last value, last excluding last value, लेकिन last तक जाता है, last को include नहीं करता. तो ये 0 1 2 3 4 तक जाएगा. तो एक ये जो है ना लिस्ट बना देता है. अब ये आई इस लिस्ट के लिए बारी बारी चलता है. पहले वो इस लिस्ट में आई की वैल्यू 0 सेट करता है, फिर 1 करता है, फिर 2 करता है, फिर 3 करता है, फिर जो है वो 4 करता है. तो रेंज का फंक्शन एक्चुअली एक किस्म की ये वाले पैरामीटर लेकर या आर्ग्यूमेंट्स लेकर एक इस तरह की लिस्ट बना देता है, और फिर जो आई है वो बारी बारी सबके लिए चलता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट ऑन हेयर प्रिंट I, then it will first time it will execute, it will print 0, क्योंकि वो 0 के लिए चला. फिर अगली दफ़ा वो 1 के लिए चलेगा. फिर स्क्रीन के ऊपर it will print 2, then it will print 3, then it will print 4 on the
स्क्रीन। सो इस तरह जो है ना वो पाइथन में वाइल फॉर का लूप और काउंटर लूप executed. It is same like the concept of the C++ or other language, but यहाँ पे ये जो लिस्ट बनने का concept है ये थोड़ा सा इनोवेटिव है, that doesn't exist in C++। वहाँ पे शुरू में लिस्ट नहीं बनती, वो पाइथन वो साथ साथ जो है वो इंक्रीमेंट करता है। यहाँ पे द लिस्ट एक्चुअली क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, और लूप को उसको पता होता है मैंने बारी बारी इनमें से चलना है, क्योंकि इस चीज को वी विल use in the second part of today lecture. So here in this way we can write the or we can execute multiple instruction while we know how many times we have to execute the code. So Python में for का loop इस तरह है, और हम इस I को we can use within the loop। और loop की ये वही बात है जो last time हमने discuss की थी, क्योंकि after loop definition it will always come colon, because why? Because it has a body after it, and then whatever will come came after it we will do it with the tab indentation। तो इसका मतलब है it is the under this loop। और let's say अब ये वाला कोड है, तो इसमें हमने चेंज करनी है, एंड वी वांट टू अचीव दिस थिंग। लेट्स से वी नीड टू प्रिंट काउंटिंग ऑन स्क्रीन फ्रॉम 2 to 10। सो 2 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करनी है, एंड ओनली इवन नंबर्स, और उसमें सिर्फ इवन नंबर प्रिंट हो। लाइक वी वांट हियर शुड प्रिंट 2, 4, 6, 8 and 10। So what will be you change here in this code? So anyone if want to participate? सर 0 की जगह पहले 2 आ जाएगा, 5 की जगह 12 आ जाएगा, और 1 की जगह भी 2 आ जाएगा। Good shabash। Why are we are not writing here 10? Because अगर हम यहाँ 10 लिख देंगे तो ये 2, 4, 8 और जो लिस्ट तक जाएगा वो 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, बिकॉज इट doesn't include the last number। That's why we have to write it down the 11, or we have to write it down 12। तो ये 2 का इसका मतलब ये कि ये 2 इंक्रीमेंट करेगा, तो इट्स दिस विल बी द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हेयर। एंड प्रिंट आई तो वैसे का वैसे रहेगा, जो आई को प्रिंट करता रहेगा। तो जो है इफ वी वांट टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 2 to 4 to 2, 4, 8, 10 ऑन द स्क्रीन। सो 6 भी आएगा। सो दिस इज द वे दैट वी विल डू इट। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था वो आप बच्चे ने जो बताया है वो ठीक है। दिस इज एक्चुअली नॉट राइट, ये गलत है। स्लाइड्स में भी अपडेट कर लेंगे हम। अच्छा बच्चों, दिस इज द कंक्लूजन। लूप्स आर ऑफ टू टाइप्स, काउंटर लूप्स एंड कंडीशनल लूप्स। And in counter loops, the program knows beforehand about how many times a specific instruction or set of structure will be executed। In Python programming language, for loop is used as a counter loop, और तकरीबन सभी languages में C++, Python, और even these slides are from the our C++ course। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, मैंने इसमें कहीं पे बस C++ के वर्ड को Python से रिप्लेस कर दिया। There are two common places for it use: reading unknown amount of input from user। ये different ways हैं जब हम Python loops को use करते हैं। Actually you will better understand when you will implement the code, and more specifically when we will uh, uh, writing the data science or AI related code, then you will better understand कि कहाँ पे while use करना है, कहाँ पे for करना है, और बहुत सारे ऐसे cases हैं। मोस्टली जो है ना अक्सर हम बहुत बड़े काम करते हैं डेटा साइंस के या एआई के, तो हम लूप्स यूज ही नहीं करते। तो क्या यूज करते हैं वी विल टॉक अबाउट है लेटर इंशाल्लाह। अच्छा सर जी, हमने ऑब्जेक्टिव। वाइल हम्म, हमने वाइल लूप पढ़ा जी है। बच्चों। अगर हम वाइल लूप को डू वाइल में यूज करते हैं, जैसे आपने बताया था कि पाइथन जो है वो सेंसिटिव है इंडेंटेशन को लेकर, तो डू वाइल लूप में हम जब डू से स्टार्ट करेंगे तो वाइल जो है वो उसकी इंडेंटेशन के साथ एक टैब के साथ आएगा, या वाइल पहले मतलब विदाउट टैब आएगा। अलीना, वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चे एक्चुअली हम तो डुअल पढ़ाते नहीं इस वजह से कि
वो actually while is the one of the versatile loop. You can do anything with the जो है वो while loop. Even के counter loop can be written with the help of the while loop. So इसलिए मैं डू वाइल तो हम सी प्लस प्लस में पढ़ाते हैं, पाइथन में भी नहीं पढ़ाते हैं, इवन कि मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया, और मुझे जो आप पूछ रहे हैं मुझे ऑनेस्टली उसका इस वक्त जो है वो सिंटैक्स भी नहीं है पता। मैंने आज तक कभी डू व्हाइल यूज़ नहीं किया। तो वो प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिकल सेटिंग maybe do while is not that much used, only one or two scenarios that I can recall where do while can use. So if you really want to see the syntax, then maybe we can add into the slides here, or जो आप question पूछ रहे हैं कि indentation का naturally that come into the mind, we will add that into the slides. ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. अभी these are the assessments that you should try out कि इसके क्या आंसर है। अभी नहीं करेंगे, maybe you can try it later on, or these are the some output questions that you can see, or you can check whether you have understanding with the range function. So if you do not first you try to do it on the paper, after that you can put it into the Python code and run it and see whether your output and this output is coming is aligned. If you got some question, then you can ask maybe later on, or maybe on WhatsApp group. So these slide will be uploaded. Try to complete the write down the code and give the answers. Maybe it will give you some good practice for the upcoming courses. So अभी मैं फिर arrays पे move हो रहा है. If you meanwhile you have any question, then please ask. मैं तब तक जो है वो इसको next slides को add कर लूँ. So in second half we will discussing we will be discussing arrays and strings, or let's start with the arrays, then we will discuss how arrays help us to understand the different functions of the strings. We already discussed a scalar variable can hold a single value. Like here, these are the three scalar variables. First one is containing the integer type of data, and second one is containing float type of data, and third one is containing the string. So these are the scalar variable. They can hold only one value at one time. If I store 16 in number, then 15 will be erased or overridden. So let's say if we need to store one marks of 150 students, so how many variable we will need? It is very easy to guess it that we need 100 150 variables. So for every student, one student per one student, we need to have one variable to store his or her midterm marks. If we need to take the input of all these marks, then we have to write down the program in this way. We have to write down 150 lines of code, that stu1 maybe containing the student one marks, and ask from the user, he or she will enter the marks, then it will goes to here. Then same we will do it for 150 student. So it is very cumbersome coding. We cannot use this code into the for loop, because in for loop it will not automatically change one from one to it will not goes like two here. So we cannot do this kind of instruction, or using the for or even a while loop. तो ये असल में लूप के थ्रू तो इंस्ट्रक्शन रिपीट हो जाएगी, लेकिन ये जो वेरिएबल का नाम है ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा. So this is the difficult way to write a code for 150 students. So it is not practical enough. Maybe we can imagine कि अगर student की तादाद 1000 हो जाए, तो then what will we do? So it means whatever we have studied last time, single scalar variable, they are very good, but they are not sufficient enough for the larger data of same kind. So यही चीज़ हम तकरीबन आप जितना भी कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे एक्चुअली और पढ़ते जाएंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि पहले आपने वेरिएबल पढ़े, यू विल सी दे आर नॉट
सफिशिएंट इनफ, फिर आप कुछ और पढ़ेंगे, फिर यू विल सी कि वो भी काफ़ी नहीं है, फिर वो तो ग्रेजुअली you get introduced with the higher type of data structures that can contain different type of data. So at the moment, the challenge is to store 150 numbers in RAM, and we do not we see when we have seen that these variables are not single scalar variables are not good enough to handle it. So uh, the problem is more aggravated if we have to store 100 or 1000 or 10,000 records. Uh, for this purpose, every language provide another data structure instead of the scalar variable. Those are called the arrays. In Python, more specifically, we call the arrays to list. So whenever we talk about Python, we call the list. There is some details difference between why we call list here and why we do not call the arrays here. So इसका कोई technical जो है, of course ये दोनों नाम जो है उसमें फ़र्क है, बट फॉर द मोमेंट वी विल सी कि दीज लिस्ट एज द सिनोनिम ऑफ द अरेज, तो हम यही समझेंगे अरेज और लिस्ट आर द सेम कॉन्सेप्ट, बट ग्रेजुअली जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, अरेज में वी कैन डिक्लेयर सिंगल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज. Maybe in this way, in Python, we can declare a single variable, and then we use the assignment operator, and then we use the square brackets, and we will mention the values. So what Python will do? Python will make a list in backend. वो एक बैकएंड पे एक लिस्ट बना देगी, और ये लिस्ट की वैल्यूज एक ही वेरिएबल के थ्रू एक्सेस हो सकती हैं. कैसे? वो ऐसे कि इस ये जो तमाम वैल्यूज हैं, दोज विल गोज इनसाइड हेयर इन दिस मेमोरी. ये थोड़ी सी डिटेल एग्जांपल है, मैं इधर ही आपको बताता हूँ. तो ये क्या करेगा यहाँ पे, इट विल क्रिएट ए memory into the RAM. First, if we declare here n is equal to 20, what will happen? There will be only one box will be assigned to this n, and 20 will store into the memory. But if we declare the variable in this way, it will assign these many boxes to the memory. Like here, the four values are required, are we are storing, then it will assign four boxes to the memory, and it will give same name to every box. अच्छा, अब इसमें यू कैन इमेजिन कि अगर सेम नेम वो दे रहा है, तो हम जब इसे कहेंगे ये वाली वैल्यू उठाओ, तो फिर हम क्या कहेंगे? सो इन दैट केसेस, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, व्हाट ऑल द लैंग्वेज डू, दे एक्चुअली असाइन द इंडेक्स वैल्यू. तो वो कहते हैं कि आप ना नाम तो वही रखें, लेकिन ना इंडेक्स वैल्यू की मदद से ना मैं मुझे बता दें, तो मैं आपको ना वो वाला डाटा उठाकर ला दूंगी. लाइक इफ आई वांट टू एक्सेस दिस 15, then I will write down stu1. So it will show me 15, or it will access this part of the memory, there 15 will be returned on. So at 0 index, it will goes 10 will goes here, and at uh, 2 index it will start from the 0, and then 1, then 2, then 3. At second index, or 2 index, it will store 20. At third index it will store 30, and I can access every block of the memory with the index number. I can use it this variable in the while I am taking input from the console, or I can use this variable through the print statement. I can use this variable with index number while maybe adding it with the marks of the other students. Maybe I need have to take the average of all students, then I can use these notations in a mathematical expression. So this is the way to store multiple records in a single variable using in Python. So we call it the list. हम इसे जो है वो list कहते हैं. तो पाइथन में जो लिस्ट हैं वो इस तरह डिक्लेयर हो जाती हैं कि हम शुरू में इनको इनिशियलाइज करें विद ऑल वैल्यूज. तो 150 वैल्यूज वी कैन गिव इन दी लिस्ट. मे बी यू कैन
you are getting some questions के in previous example we want to take the values from the user, तो उस वक्त तो हम ये list नहीं होगी ना records जो हम manually enter कर सकें, we have to take that from the user, so उस वक्त ये code कैसे होगा? तो of course we can write the code in this way as well Python. एक तो ये तरीका है कि we assign the values to the variable at the time of the declaration. Second way, the list in Python can grow infinitely. You can store any number of records or values within the Python list. This is the one main difference between the C++ and Python. Python may we can extend the list at the for any capacity. बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ा सा दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट, वो नहीं करती, तो इसलिए उसमें उनको अरेज कहा जाता है, और जिनको भी अरेज कहा जाता है तो उसको ज़रा एक्सटेंड करना इज ए डिफिकल्ट, ठीक है। और पाइथन में इसीलिए लिस्ट कहा जाता है कि दे कैन बी एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंड कैसे करेंगे? इनिशियली वी कैन स्टार्ट विद द एन एम्प्टी लिस्ट STU, and here it is the empty list. It means we are not storing anything into the list. This list is empty. We are only telling Python that STU will be a list type, or maybe this variable is the type of the list. It is not the scalar variable. In this way we are telling the Python. Then here when I have to add something into the this list, then I will use the append method. Append will add the value into the relevant place. So at the moment, what is the relevant place? It will add it as the first value of the list. So in memory, what will happen? At 0 index, 90 will be stored in STU list. So similarly, when we can add the another element here, STU append 23 point, it will goes at the second index. Then we can add STU append 28 point, it will goes into third position. So in this way, we can start with the empty list, and we can add gradually values into the that list. Of course, these values can be hard coded as they are written here in case of 19, or we can take the value from the user as well. We can write down input, user input, later we can store that into the list. अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो पाइथन की लिस्ट में और अरेज में डिफरेंस होता है, दैट इज मे बी you can imagine that from here. And what is that? In other language, arrays can store similar kind of data. For example, in C++, if we declare an array integer x maybe of 10, then we can only store integer values into the x. But in Python, the list can have integers, it can have float. Same list, actually ये same list है जिसमें हम integer भी store कर रहे हैं, इसमें हम float भी store कर रहे हैं. Maybe at some place we can store it string value as well. We can store maybe some name here as well. We can write here stu dot append ABC. So Python never minds, it will store the string values into the Python list. It will store this integer value into same list. It will store the can store the float values. और इसके अलावा भी advanced जो इसके अलावा भी चीजें आगे हम पढ़ेंगे, they will come up. They can be stored into the list. So in Python, lists are more dynamic. They can extend at runtime. We can add integers, floats, strings, and other values into it. अच्छा जी, और अगर आपने एक्सेस करना हो, as I told you, you can access any element of the list using the index number. We will mention the index number, and it will uh, get the corresponding values from the uh, table or from the RAM for the given index. So we can also use these into the expressions. We can use it into the input. In other words, we can. It is very safe to say that we can use these array indexes into as we are using the
regular scalar variable. So this is actually acting as one scalar variable. तो ये जब हम इंडेक्स के साथ किसी पाइथन की लिस्ट का कोई एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे जैसे हम एक्सप्रेशन में इसको लिख सकते हैं, हम इनपुट में लिख सकते हैं, प्रिंट में लिख सकते हैं, हम किसी भी जगह पे लिख सकते हैं. सो वही जो बात हम पहले कर रहे थे कि वी कैन start with the empty list. We can use take the input, enter number, and then convert it into integer and store into the some scalar variable, and then we can add that scalar variable into the list. तो actually अगर यूजर इधर 20 एंटर करता है तो ये इस लिस्ट के अंदर 20 चला जाए. सो इस तरह जो है वो कर सकते हैं, और वी कैन यूज इट दी एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स एज वी वांट. मे बी अगर हमने 150 स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स इनपुट करने हैं, देन वी हैव टू राइट ऑन इट 150 टाइम्स. सो यू कैन, maybe you can know convert this code into more dynamic way. Then for you know you can use the loop for taking 150 student input. तो अगर हमने लूप्स लगाना हो तो हम इसको जो है इसी कोड को वी कैन कन्वर्ट in this way. We can start with the stu, and we can write down for loop for I in range. कि हमें लूप चलाना है 150 टाइम. आई कैन स्टार्ट इट विद फ्रॉम 1. It will goes up to 151 times, and every time it will add 1 into the index. So I am not using the I, will be using the ISH. I will write down this statement here in this part, and then I will stu append here in this part. So this loop will keep executing. It will keep adding the 150. It will keep ask 150 times from the user to enter a number, and then it will add this line, add that number into the list. So in this way, we can take the input for 150 student using these 4 lines of code. The lists are used in Python in this way. Uh, let's discuss the some other functionality of list. Let's say we have a list available. If you have any question, then you can ask me. I may hold for 1 or 2 minutes. If you have any question, then you can ask me. Then actually the whatever we are discussing at next, that is bit different from this concept, actually based on this concept, that is. So if you have any question, then you can ask. You can put in chat, or you can raise your hand. सर हम स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर भी स्टोर करवा सकते हैं खुद से. Yes, we can store at specific index, but that index should exist before in the list. Like अगर मेरे पास एक लिस्ट है, अभी ये ब्लैंक लिस्ट है, तो अब मैं अगर stu 2 पे कुछ स्टोर करूंगा, 4, इट डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि 0 और 1 पे क्या होगा देन. सो ये बेहतर है कि जब आप ये वाली नोटेशन यूज करें, देन यू हैव मे बी लिस्ट इज अप टू दी दैट पॉइंट. मे बी इस तरह हो stu और 2 4 3 2 है, तो you want to override this part, 3. तो you can write down stu 0 1 2, sorry, 2 is equal to 30. So it will actually store 30 into at this part. तो ये क्या बन जाएगा, this new list will be 2 30 and 2. ठीक है, तो ये इस तरह आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं. और अगर हम लिस्ट का साइज पहले डिफाइन कर दें, ये लिस्ट जो है अच्छा, वो that is not approach for Python program. ठीक है, वो हम किसी ना किसी तरह उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लिस्ट को, कि इफ वी वांट. लेकिन पाइथन, यही डिफरेंस है बिटवीन द अरेज एंड पाइथन. तो पाइथन कहती है कि आप इस तरह ना करें, यू शुड मेक ए लिस्ट दैट कैन ग्रो इटसेल्फ. तो सेम काइंड ऑफ concept that may be you will, or you may find out in some data structure course, linked list. So Python list are work in that way. अच्छा बच्चों, अभी नेक्स्ट जो है वो, लेट्स से
वी हैव ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये पहले से डिफाइंड है और हमने पहले से ना खुद से ही डिफाइन कर दिए हैं 5 वैल्यूज़ को। And we are asking user to enter a number to find user enter some number, और यहाँ पे भी हमने कोड लिखना है। वो कोड क्या होगा? वो कोड ये होगा कि वो एक्चुअली will tell us whether that number exist within the list or not, कि वो ये नंबर लिस्ट में है या नहीं है। तो इसको अगर करें तो आप कोई लिख सकते हैं कोड? Anyone want to give idea about it? सर फॉर लूप के साथ शाबाश। हम We can write on it. जीरो इंडेक्स स्टार्ट रखेंगे, जो मैक्सिमम रेंज होगी वो 6 रखेंगे, 1 का इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और बीच में हम इफ की कंडीशन लगा देंगे कि जो हमारी अरे है उसके इस इंडेक्स पे वो कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन के साथ एन पड़ा हुआ है, तो वो ट्रू दे दे, नहीं तो वो फॉल्स दे दे। ओके, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। दिस इज द पॉसिबल वे एज यू टोल्ड अस कि यहाँ पे वी विल राइट टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, और उसके बाद हम एक वेरिएबल फ्लैग सेट कर लेते हैं कि उसमें जो शुरू में जो वैल्यू है वो वी इनिशियलाइज इट विद द वी शुड इनिशियलाइज इट विद द फॉल्स। ये हमें सिर्फ ट्रू नहीं, फॉल्स इनिशियलाइज करेंगे, मतलब कि हम शुरू में ज्यूम करेंगे हमें नहीं मिली वैल्यू, और उसके बाद हम फॉर को लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 0 5 1, यानी कि 0 से शुरू करेगा और 0 1 2 3 और 4 के लिए चलेगा, क्योंकि वो ये वाली लिस्ट एक बन जाएगी और वो इसके लिए चलेगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू होगी दैट विल बी 0, और यहाँ पे आई की जगह 0 आ जाएगा, नंबर 0 एन के साथ कंपेयर होगा। तो लेट्स से यूजर ने यहाँ पे एंटर किया हुआ है 25, तो ये नंबर 0 पे एक्चुअली इट विल टेक दिस वैल्यू 20, और वो n की वैल्यू यूजर ने 25 की है, दिस विल नॉट बी कंपेयर्ड विद ईच अदर, सो दिस विल रिटर्न फॉल्स, और ये वाली फ्लैग की वैल्यू ट्रू सेट नहीं होगी, यानी कि वो फॉल्स ही रहेगी। इट विल गोज अगेन फॉर आई इंडेक्स, इट्स वैल्यू आई, हियर इट विल एक्सेस 30, ये 30 एक्सेस होगा, और वो इट विल कंपेयर इट विद दी 25, अगेन इट विल गेट फॉल्स, ये ट्रू नहीं होगा, और फिर वो इस तरह लूप चलता है। ये लूप चलता रहेगा। अगर उसको किसी जगह लेट्स से यूजर, अभी तो इस केस में इसको किसी जगह नहीं मिलेगा, तो फ्लैग की वैल्यू इट विल रिमेन फॉल्स, और यहाँ पे वो चेक करेगा इसके बाद जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा, ये सारा ये इसके बाहर आ जाएगा इस जगह पे, यहाँ पे ये चेक करेगा अगर फ्लैग इज ट्रू तो वो प्रिंट कर देगा नंबर 4, अदरवाइज नंबर नॉट 4। इन दिस केस जो अभी हमने सिनेरियो बनाया है इसमें फ्लैग की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, और वो एल्स वाले पार्ट में आएगा एंड इट विल प्रिंट नंबर नॉट फाउंड। तो वो इस वाले पार्ट के अंदर जो है वो हमें कह देगा कि नंबर नहीं मिला। तो अगर इसको लेट से कोई वैल्यू वो यूजर एंटर कर देता है, 5 एंटर कर देता है, तो फिर इसको थर्ड जैसे ये सेकंड इंडेक्स पे आएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फ्लैग की वैल्यू विल सेट बी इक्वल टू ट्रू, और उसके बाद जैसे लूप खत्म होगा तो यहाँ पे हम देख लेंगे फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू और प्रिंट हो जाएगा नंबर फॉर्म। तो दिस इज द वन वे टू राइट द कोड इन द पाइथन। लेकिन याद रखिएगा दिस इज द मे बी यू कैन से इट इज द सी प्लस प्लस वे, और यू कैन से इट इज जावा वे, इट इज सी शार्प वे, इट इज नॉट पाइथन वे। काम कर देगा ये, यानी कि जो हम करना चाहते हैं वो कर देगा, लेकिन ये पाइथन में कोड लिखने का तरीका था। पाइथन में जो है ना, अगर आप इतना लंबा कोड लिखते हैं तो इट मीन्स समवन सी इट एंड ही और शी विल कंक्लूड इट कि यू डू नॉट नो पाइथन, वो यही कहेगा आपको पाइथन नहीं आती। तो क्योंकि इट इज दी सी प्लस प्लस वे और इट इज दी अदर लैंग्वेजेस वे, आई लेट यू नो कि पाइथन में किस तरह यही सेम काम किस तरह करेंगे। अदर वे अराउंड उससे उसको देखने से पहले ना जरा क्विकली ये देख लें कि हम ना हमारे पास अगर लिस्ट हो ना तो हम ऐसा लूप भी चला सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं, हमने लास्ट टाइम देखा ना रेंज हमने यूज़ किया है, हमने कहा 0 1 0 5 और 1, तो ये रेंज का फंक्शन है एक्चुअली एक लिस्ट ही बनाता है, लिस्ट तरह की कोई चीज़ बनाता है, एग्ज़ैक्टली लिस्ट नहीं कह सकते उसको बट ये लिस्ट की तरह की कुछ बनाता है। तो वो लूप जो चलता है ना वो एक्चुअली इस लिस्ट के लिए चलता है जो रेंज जनरेट करता है। तो लेट्स से हम वो लिस्ट रेंज से ना जनरेट करवाएँ, वो लिस्ट हम खुद बना लें। जिस तरह नंबर्स की लिस्ट ऑलरेडी वी हैव द नंबर लिस्ट, और हम उसको लूप में चला लें फॉर आई इन नंबर्स।
तो बारी बारी for every number it will take one number from the list and it will execute the all the lines, and then again it will take next number from the list and then it will execute the lines. So in this case ये क्या करेगा, पहले 20 प्रिंट करेगा, फिर 30 प्रिंट करेगा, फिर स्क्रीन के ऊपर 5 करेगा, फिर 19 करेगा, then it will print 22. So ये रेंज ही की तरह काम कर रहा है, बट हेयर रेंज से तो हम लिस्ट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन बट हेयर वी हैव मेंशन द लिस्ट दैट वी ऑलरेडी डिफाइंड इट. सो ये भी एक तरीकाकार है पाइथन में जो है ना वो लूप्स लगाने का. और अगर हम इसको देखें तो प्रैक्टिकली ना पाइथन में हम आम तौर पर कभी भी इंडेक्स नंबरिंग यूज नहीं करते. इंडेक्स नंबरिंग हम क्या यूज करते हैं करके, इंडेक्स नंबर से तो हम ये वैल्यूज एक्सेस करते हैं ना. तो हम ऐसे नंबर जीरो कर रहे हैं तो वो तो हमें इस लूप में वैसे ही 20, 35, 19, 22 बारी बारी रिटर्न कर देगा. तो हमें तो लूप्स के अंदर इंडेक्स नंबर यूज करने की जरूरत ही नहीं. So, having keeping this in our mind, we can rewrite our request code. कैसे लिख सकते हैं? वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम कहते हैं यूजर से इनपुट करो फ्लैग इज ट्रू फॉर आई इन नंबर्स. अब वो आई बारी बारी इन तमाम लिस्ट में एलिमेंट्स के लिए चलेगा. अगर वो आई बराबर है एन के तो हम फ्लैग को ट्रू कर देंगे. सारी लॉजिक वो ऐसी है. यहाँ पे भी ये गलती है, अब इट शुड बी फॉल्स. सो ये सारी लॉजिक वैसे ही काम करेगी. बस इसमें क्या हुआ, किससे आज़ादी मिल गई हमें, वो इंडेक्स नंबरिंग से आज़ादी मिल गई. पाइथन ने हमें दे दी कि वो ना आप जीरो को उन्हें यूज करना. तो यूजुअली एट सम प्लेसेस यू हैव टू यूज दिस इंडेक्सिंग नंबरिंग, लेकिन इन सच केसेस यू कैन you do not need to use the index numbering. Again, it is not the Python way. ये काम अगर करना हो तो ये पाइथन का तरीका का नहीं है. बहरहाल this is the one thing that we are understand here, that in loop we do not always need to use the range function. We can directly use the list here. So हम list को भी itself भी यूज कर सकते हैं. अच्छा जी, अब इसी प्रॉब्लम को हम पाइथन के तरीकाकार से कैसे यूज कर सकते हैं. दिस इज द पाइथन वे. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन राइट हियर दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि आई इन नंबर्स, जो इन का कीवर्ड है ना, वो ऑटोमेटिकली चेक करके बता देता है ये नंबर्स में ये वाला एलिमेंट है कि नहीं है. तो इफ आई राइट ऑन आई इन नंबर्स, आई में जो जो यूजर ने, सॉरी इधर आई नहीं होना चाहिए, एन, एन इन नंबर्स. तो जो यूजर ने वैल्यू एंटर किया, लेट्स ये एग्जीक्यूट होगा, इधर यूजर 10 एंटर करेगा तो एन में 10 आ जाएगा. इधर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, आई एम चेकिंग इफ एन इन नंबर्स 10 इन नंबर्स है. यहाँ पे इट विल रिटर्न फॉल्स क्योंकि वो इन नंबर्स में नहीं है. तो पाइथन ऑटोमेटिकली पीछे बैकग्राउंड पे वो सेम वही लूप चला रहा होगा जो हम चलाते हैं. तो ये लेकिन इनका जो कीवर्ड है ये एक्चुअली इट विल ऑटोमेटिकली डू दैट पार्ट. और हम अगर वो है तो हम कह देंगे नंबर फाउंड, अगर नहीं है तो हम कह देंगे नंबर नॉट फाउंड. और मे बी इफ यूजर एंटर हेयर वैल्यू ऑफ 30, तो 30 इस लिस्ट में है तो इट विल रिटर्न द ट्रू एंड दिस पार्ट विल द प्रिंट नंबर फाउंड. सो इस तरह जो है पाइथन, दिस इज दी पाइथन वे. ये हम पाइथन में करते हैं. और इस तरह हम पाइथन में इनका जो कीवर्ड है दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, और ये हमारा तकरीबन बहुत सारे लूप्स का और बहुत सारी चीज़ों का काम जो है ना ख़त्म कर देता है. और इससे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड और चीज़ें एग्जिस्ट फॉर अस. सो let continue with the strings because thoda sa time reh gaya. Here let's say in Python, as in other languages as well, strings always treated as the arrays. So in Python we can say strings are the list. तो स्ट्रिंग लिस्ट ही होती है. मसलन हमने जो लिखा है ना वर्ड पाकिस्तान, we can write on here print word 0, it will print p, print word 1, it will print a, print word 2, it will print k. So वो जो strings होती हैं they always be a arrays or list in all languages. So उस तरह फिर हम उस पर इंडिविजुअल इंडेक्सिंग को भी एक्सेस कर सकते हो. तो वही आप जो लास्ट टाइम हमने देखा है, तो अगर वो लिस्ट है, ये सारी एक लिस्ट है जो 0, 1, 2, 3 इस तरह इंडेक्सिंग भी पड़ी है, तो आई कैन राइट ऑन दिस स्टेटमेंट फॉर w इन वर्ड. तो क्या हर एक w के लिए जो वर्ड में है उसके लिए लूप चलेगा और प्रिंट w करेगा तो इट विल प्रिंट p a k i s t a n ऑन द स्क्रीन. सो इस तरह हम स्ट्रिंग को प्रोसेस कर सकते हैं. तो आप यू कैन इमेजिन कि अगर हमने ये देखना हो
क्या किसी ने जो ईमेल एड्रेस अपना इनपुट किया है उसके अंदर @ है कि नहीं है। तो अगर वो लिस्ट वाली अप्रोच है तो यू कैन इमेजिन कि कितना आसान काम है पाइथन में। यू जस्ट राइट नीड टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इफ इन वर्ड, अगर वर्ड में वो co@ustadam.org में अगर है तो हम कहेंगे हाँ मिल गया, नहीं है तो नहीं मिला। अदरवाइज यू कैन इमेजिन कि अगर आपको पूरा फॉर का लूप लगाना पड़े तो इट इज क्वाइट difficult thing. Of course, we have a better, even better than this. We have There are many other ways to do or perform such tasks in Python. We will see gradually when we will go at the higher level of the things. Then we will see those ways, those methods. Inshallah Taala. अच्छा जी, learning objective was to declare initialize and use arrays to solve real world problem that need relatively large amount of data. तो इसके एंड पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये एक्चुअली सी प्लस प्लस की स्लाइड आ गई है, तो ओवरऑल उसको यू कैन स्किप इट एंड यू कैन focus on this one. These are the generic program that usually we ask our C++ student to do it, but in Python you can also do it, and maybe in much easier way as we have discussed. So try to complete these tasks, and inshallah next class we will cover the list comprehensions. Those are very much used in different data science and AI tasks, and also we will cover some 3 to 4 new data structures other than the list, and that will complete our foundation for the next upcoming courses. So if you have any question, then you can quickly ask. Otherwise, we will close the class here. सर पाइथन ऊप ओरिएंटेड है। नहीं बच्चे, Python is not a pure OOP oriented language. It support OOP, object oriented programming, but it is not uh, object oriented languages. जब हम कहते हैं ना कोई चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है, तो एक्चुअली वो खुद इटसेल्फ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करती है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फैसिलिटेट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम उसमें कर सकते हैं। पाइथन भी फैसिलिटेट करती है, बट इट इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन इज ए फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये लेकिन ऊप के सारे काम हम कर सकते हैं। किसी तरह कान घुमा के पकड़ने वाली बात होती है पाइथन में, लेकिन बहरहाल जितनी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं प्रैक्टिकल सेटिंग, वो हम करते हैं, लेकिन ये प्योरली सपोर्ट नहीं करती। प्योर जो लैंग्वेजेस हैं जिनका मुझे एक्सपीरियंस है, दोज आर दी जावा एंड सी शार्प। और सर हमने लास्ट सेमेस्टर में सी शार्प में फॉर ईच लूप पढ़ा था, तो यहाँ पे भी पाइथन में हम कीवर्ड फॉर ईच यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी अच्छा हमने नहीं, फॉर लूप पढ़ा है वो और वो ये आप फॉर ईच देखें कि सेम ही है। वो ही है, जैसे फॉर ईच की तरह ही है, ठीक है। तो इसमें फॉर ईच की जरूरत ही नहीं है। असल में वो उधर जो फॉर ईच आया है वो इंस्पायर्ड बाय पाइथन से आया था। तो यहाँ पे जो फॉर है आई इन लिस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट के लिए चल रहा है। तो उसमें और इसमें फॉर ईच की जरूरत नहीं है, तो ये सेम लूप ही सारे काम का, तो है वो इसके बराबर ही इक्वलेंट। अच्छा, ज़ुहैब ने क्वेश्चन किया था, दैट वाज़ मिस्ड। उसमें ये था कि इंडेक्स नंबरिंग 0 से क्यों स्टार्ट होती है? ज़ुहैब, इसकी कन्वेंशन है, वो क्योंकि ना जो बाकी लैंग्वेजेज़ में इनिशियली सी प्लस प्लस बाकी दूसरी लैंग्वेजेज़ थी, वो इंडेक्स अरे का जो नंबर होता है वो पहले एलिमेंट को देते हैं। तो वो उसमें ना असल में रन टाइम पे इसको 0 या 1 ऐड किया जाता है उसपे, तो जिससे वो नेक्स्ट एड्रेस कैलकुलेट होता है। तो अगर 0 से स्टार्ट होगा तो फिर उसमें जितना मेमोरी एड्रेस कंटेन करता है उसको उसमें ऐड करें तो फिर अगला एड्रेस मिलता है। तो पॉइंटर अलजेब्रे की उस कन्वीनियंस के लिए जो है ना वो अरेज ऑलवेज स्टार्ट बाय दी 0 इंडेक्स। उसमें जो है उसको हम जो है वो 1 से इसलिए वो स्टार्ट नहीं होता। लेकिन कुछ लैंग्वेजेज़ हैं जिस तरह विजुअल बेसिक जो है वीबी डॉट नेट है, उसमें इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम दी 1। मेरा एक ही के साथ ऐसा एक्सपीरियंस है, बाकी सभी 0 के साथ स्टार्ट।
अच्छा, ज़ुहैब का दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने बोला कि वो फॉर ईच इंस्पायर, यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने एक्चुअली जावा की थी 2001 में, तो मैं उसका सर्टिफाइड था सन सिस्टम्स का। तो मैंने ओवर द टाइम देखा है जावा ने भी फॉर ईच का लूप इंट्रोड्यूस किया है, पहले नहीं था। तो ऑफ कोर्स लैंग्वेजेज़ में इसीलिए तो वर्जन्स आते हैं ना, जैसे जावा 1 थी उस वक़्त, अब जावा मेरा ख़्याल है लास्ट टाइम जब मैंने चेक की थी वो 8 या 9 तक पहुँची होगी, वो भी मेरी 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो अब भी उससे भी ज़्यादा वर्ज़न होगा इसका। पाइथन स्टार्ट विद द 1.1, देन पता नहीं कितने उसके 3.14 या 15 पे पहुँची हुई है। ये चेंजेज़ वो करते हैं कि जो बनाते हैं लैंग्वेजेज़ को, जो हर लैंग्वेजेज़ की कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, कोई ना कोई कंसोर्शियम होता है। सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट की है, जावा सन वालों की है, वो ओरेकल ने ले ली है। तो इसी तरह पाइथन का भी अपना कंसोर्शियम है। तो वो चेंजेज़ करते हैं, इसकी पहले आरएफसी बनती है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट बनता है किसी भी टेक्निकल चीज़ के एडिटिंग के लिए, देन आफ्टर दैट वो चेंजेज़ होती हैं। अगर कभी मौका मिले स्टैंडर्ड्स पढ़ने का तो आरएफसी को ज़रूर देखें। अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है।